my name is Vijeta Tomar and I'm your fitness trainer and yoga coach. आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया ताकि आप लोग मेरा वो वर्कआउट वाला वर्जन देख देख कर बोर ना हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज और कुछ वेट्स के साथ फॉर योर लव हैंडल्स, यस फॉर योर साइड्स। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी मॉम्स पोस्टपार्टम, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, सब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, स्पेशली लड़कियों की, कि हमारा बेली फैट कम नहीं हो रहा है, हमारे लव हैंडल्स कम नहीं हो रहे हैं, हमारी साइड्स कम नहीं हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है किसी भी ट्रेनिंग में, राइट। स्पॉट रिडक्शन मीन्स ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह का वर्कआउट करें और वहाँ से फैट स्पेसिफिकली रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी ट्रेनिंग में स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। वेट लॉस का काम आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन सब मिलकर करते हैं। सो स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, प्लीज़ इस मिथ से बाहर निकलिए। अगर आपको लगता है कि आप बाइसेप का वर्कआउट कर करके अपने आर्म्स का फैट कम कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम वर्कआउट करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और कैलोरीज बर्न करने के लिए, दैट फर्दर प्रोसीड टू वेट लॉस इनडायरेक्टली। बट अगर आप कंटिन्यूसली बार बार एक ही जगह का वर्कआउट करेंगे जस्ट फॉर द वेट लॉस, जस्ट फॉर द फैट लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, मसल्स वीक हो सकती हैं, मसल्स इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग हो सकती है और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज़ के। फैट लॉस, वेट लॉस, स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा, स्पेसिफिक स्पॉट रिडक्शन, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट फैट लॉस नहीं होता है। ओके, सो ये तो रही हमारी नॉलेज की बात। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑब्लिक्स। यस, मैं आपके साथ ऑब्लिक्स का वर्कआउट शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग कई बार एब्स के वर्कआउट पर तो फोकस करते हैं कि हम एब्स बना रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, एब्स बना रहे हैं, बेली फैट कम करना है, बेली फैट कम करना है, बट हम ऑब्लिक्स पे फोकस ही नहीं करते। ऑब्लिक्स आर योर साइड्स मसल्स, दिस, ओके। तो हम ऑब्लिक्स पे फोकस नहीं करते, एब्स पे वर्कआउट करते हैं, बट हमारी जो छोटी छोटी मसल्स हैं, जिन मसल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, इट्स गुड अगर आप उन मसल्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं, उन मसल्स की भी ट्रेनिंग करते हैं तो, ओके। सो अपने वर्कआउट का ध्यान रखिए, अपने ट्रेनिंग का ध्यान रखिए, और हर एक बॉडी पार्ट, हर एक मसल्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑब्लिक्स का नहीं करेंगे, ऑब्लिक्स का कर रहे हैं तो एब्स का नहीं करेंगे, नहीं। हमारे सारे बॉडी पार्ट और सारे मसल्स ग्रुप की ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। मेरा ब्लॉग है इसके रिगार्डिंग, लिंक गिवन इन द सेक्शन बिलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो एक स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। यानी कि जिस ट्रेनिंग में आप अपनी बॉडी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं वो सिर्फ उसी के रिगार्डिंग ट्रेन होगी। अगर आप हाफ स्क्वाट पे ट्रेन है तो फुल स्क्वाट पे ट्रेन नहीं होगी बॉडी, ओके। तो हमें ध्यान रखना है अपनी ट्रेनिंग का, अपने न्यूट्रिशन का, अपनी डाइट का, हर चीज़ का, और फिर होगा फैट लॉस और वेट लॉस, ओके। बट हम जो एक्सरसाइज करेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द स्ट्रेंथनिंग, दैट इज रिगार्डिंग टू द मसल बिल्डिंग, ऑलराइट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लव हैंडल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ऑब्लिक स्ट्रेंथनिंग, बॉडी वेट और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। स्टार्टिंग नाउ। So your first exercise is side bending के एक हाथ ऊपर करेंगे और slowly inhale and bend to side. Take your one hand up, slowly inhale and bend to other side. While exhaling, bend to other side. Repeat 5 times each side. दोनों साइड पे 5 बार रिपीट करेंगे. And stretch your obliques, stretch your sides completely. So this is the very good exercise. कोई भी आप एब्स का वर्कआउट कर रहे हैं उसके लिए एज अ वार्म अप ये साइड बेंडिंग एक्सरसाइज, इट्स अ रियली गुड स्ट्रेच.
So for this exercise you have to come to the sumo squat position, or we can say in goddess position in yoga. Okay, bend down little and now go for the bend to the sides. स्क्वाट पोजीशन में आ करके दोनों हाथों को सर के पीछे या सर के साइड में रखेंगे और स्लोली बेंड करेंगे टू द साइड्स. सेंटर पर इनहेल and while exhaling bend to side. Remain in the squat position, so this will again strengthen your quads, strengthen your legs, and of course it's good for your obliques. And this one is my favorite exercise for obliques because it is similar to the dance step. So it looks like dance step. So you have to keep your legs shoulder apart and try to crunch with your right elbow and left knee meeting together. Right elbow और left knee को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और एक साइड में एक अच्छा सा crunch देंगे in a standing position. So it's very easy and very good exercise while standing for your abs, for your obliques. And keep your body completely engaged and tight and toes pointed. And try to meet your elbow and your knees. 10 repetitions, both of the sides. So for tornado twist, you have to come in the lunge position first and just interlock your fingers in front of you and give a wood chop. Okay, give a twist to your back. So I am here in a completely engaged lunge. Like मैंने अपना जो lunge है, मेरा knee जो है पीछे वाला वो ज़मीन पर नहीं है. If you are uncomfortable, balance नहीं हो पा रहा है तो आप अपने lunge में अपने knee को नीचे भी रख सकते हैं and stay comfortable. और इफ़ यू आर अ बिगनर और लंच पोजीशन में बैठने में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्टैंडिंग में भी सेम एक्टिविटी सेम मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. सो यू हैव टू गिव अ ट्विस्ट टू योर बैक. 10 repetition each side. So for this you can take some weight according to your capacity और आप 5 kg 3 kg जिसमें भी आप comfortable हो वो आप ले सकते हो. And it is similar to side bending. So you have to go at least till your knee with your weight. Okay? आप अपने weight के साथ जो भी आपने डंबल लिया हुआ है या जो भी weight लिया हुआ है उसके साथ आपको इतना stretch करना है कि आप at least अपने leg के knee तक पहुँच पाओ उस weight के साथ. Right? And give beautiful crunch to your sides. So 10 repetitions, both of the sides. So this one again similar to the standing body chop. Take the dumbbell and perform a dance step. Yes, it's look like a dance step. So keep your elbow completely straight while going up and just lift your knee as high as possible. जितना ऊंचा उठा सकते हो अपने नी को उतना ऊंचा उठाना है और एल्बो को completely straight रखना है जैसे आप वेट को ऊपर लेकर जाते हैं. Okay? Give a beautiful twist and crunch to your obliques. 10 repetitions each side. So we all are familiar with this exercise and this is called Russian twist. Take your weight. So I don't have medicine ball right now here, so I'm using this basketball here. But आप medicine ball ले सकते हैं. कमर को bend नहीं करना है, कमर को straight रखना है और एक V position में रखना है
बिगनर लेवल पर हैं तो हील्स को नीचे ही रखिए, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू. बट इफ़ यू आर लिटिल एडवांस तो आप अपनी हील्स भी ऊपर उठा के थोड़ा और स्ट्रेस दे सकते हैं अपने obliques की मसल को और एब्स की मसल को. ओके, एल्बो completely straight and give a beautiful round to your medicine ball. At least 20 repetitions. So for this exercise, chest completely out and keep your back completely straight and give the leg extension. Cross करना है डम्बल्स को and make sure आपके डम्बल्स नहीं गिरे. Okay, so you need to focus also. At least 20 repetitions. So for this, come to the plank position, forearm plank position, and just take your hips and swing side to side. Try to touch your sides completely to the floor. Completely दोनों sides को, दोनों side पे जैसे ही आप move करते हो तो completely touch करो ground से, so that it will be more effective. At least 20 repetitions. So this one is little tricky because you have to lift both of your legs and your elbow, and you have to meet your elbow and your leg. But if you are not comfortable, so you can lift one leg and try to crunch with your elbow and one leg. Okay, ऊपर वाली leg और elbow के साथ भी crunch कर सकते हैं, because कई बार at beginner level पर ऐसा होता है कि हम दोनों legs एक साथ नहीं lift कर पाते. मेरे साथ भी हुआ है. So अभी तो मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ आई एम ओके विद दिस मूवमेंट, बट आई कैन अंडरस्टैंड. तो आप एक लेग के साथ भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं एंड एटलीस्ट 10 repetitions बोथ ऑफ द साइड्स. सो फॉर दिस कीप योर calves parallel to the floor and come down in lying position. And this is a simple one, that you have to give a side crunch. Simply just cross your knees and give a side crunch. Keep your knees folded, and this one is like second version of this exercise if you are comfortable with the first one. So this version will give little more stress to your abs. So just भी साइड पर आप जा रहे हैं उसके ऑपोजिट लेग को स्ट्रेट करना है, और this will give more stress to your oblique, to your love handles. So this one is very basic exercise. These are simple cyclic crunches, and it's like कि हम इस exercise को बचपन से करते आ रहे हैं, and we are so much familiar with this exercise. Even अगर आप वर्कआउट भी कभी शुरू करते हैं तो एब्स में जो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है वो हम यही करते हैं most of the times. So but you have to perform it as slowly as possible. लास्ट एक्सरसाइज लाइक जो साइड क्रंचेस आपने किए थे उसके भी आपको 20 repetitions 10 ईच साइड परफॉर्म करने हैं, एंड दिस वन फॉर दिस वन ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म 10 repetitions both of the sides. Hope you guys like the video. If you guys like the video, please hit the like button, share this video to your friends and family, और जिस किसी को भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. अपने व्यूज़ और अपने राय अपने कमेंट सेक्शन में आप नीचे डाल सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं pinaki@gmail.com. और आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर या किसी स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं योगा के लिए, या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग, या फिर वेट ट्रेनिंग, एनीथिंग,
सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट डालिए या फिर मुझे मेल कर सकते हैं. Okay, I'm available here for you, and subscribe to my channel Pinaki Yoga. I'll meet you soon in the next one. Till then, take care, stay fit, stay healthy, stay awesome.